क्या होता है एक्चुअली एमबीए लाइफ में, ठीक है। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है कि सुबह 7 बजे मैं उठा और 15 पेज का केस पढ़ना था, ठीक है। और वो मैं केस पढ़ा और 9 बजे से क्लास थी, 9 बजे से 1:30 बजे तक क्लास हुई और 1:30 बजे अचानक पीजीपी ऑफिस का मेल आता है कि 2:30 बजे से सरप्राइज क्विज है। उसके बाद शाम में कंपनी हमारा प्रेजेंटेशन, रात को क्लब कमेटी का सिलेक्शन और 12 बजे असाइनमेंट की डेडलाइन। कुछ ऐसा ही रहा है हमारा एमबीए का सफर, ठीक है। तो आज इसी सफर के बारे में हम दो दोस्त बात करने वाले हैं और जानेंगे रुद्रा से कि आगे का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है IIM इंदौर में। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो रुद्रा। हेलो हाय एवरीवन। कैसा लगा, आपने कभी सोचा था कि मेरे चैनल में आइएगा आप? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फन सेशन। सो डेफिनेटली बहुत ही फन सेशन करेंगे, एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन और जितना कैजुअली हो सकता है। गाली भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस बीप कर देना। हाँ ठीक है ओके। तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। श्योर। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। This is like the first question in any interview, MBA interview or otherwise. And हाँ, तो मैं वो इंटरव्यू वाला आंसर नहीं दूंगा। हाय, आई एम रुद्रा एंड मैं आसनसोल से हूँ, जो कि इज अ सिटी इन वेस्ट बंगाल एंड वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ है। एंड जस्ट एक सेकंड, मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ देखूँ, कहीं देख लो भाई। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, सो आई एम फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल, वही मेरा स्कूलिंग हुआ है। बचपन से आई वुड से मतलब इन द टॉपर्स लीग रहा हूँ, बट नॉट एज लाइक आईडी का तैयारी किया था, आईडी नहीं निकला, NIT हुआ। स्टडीड इन NIT दुर्गापुर फॉर 4 years इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मेरे भाई के साथ ही था। एंड लाइक ही स्टडीड मैकेनिकल, आई वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेम बैच। फिर आफ्टर my BTech did 2 years with PWC as a technology consultant, तो वो भी बहुत अच्छा experience था, maybe we can talk about it later. And फिर decided to pursue an MBA, so CAT लिखा along with job and cracked IIM Indore, and अभी I'm finally a student at IIM Indore and yeah, that's pretty much about me. Very good. So let's talk about your background perspective. थोड़ा समझते हैं कि आपको क्या इंस्पायर किया कि कैट का पेपर लिखे और मतलब IIMs पे स्टडी करें। Okay, so मेरा इनिशियल आई वुड से एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग की तरफ ही था, बट दैट वाज मोर टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मुझे नहीं मिला था। सो आई टुक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग व्हिच वाज बैक देन लाइक द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्यूटर साइंस। एंड फिर ऐसा हुआ कि लाइक आई वाज काइंड ऑफ इन अ लव हेट रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उस टाइम में आई वाज नॉट लाइक फोकसिंग ऑन कोडिंग एज वेल, जो CS का मेरा ये था। भाई सब पे ऐसा होता है ना, इनिशियल में जब भी इंजीनियरिंग लो तो लगता है कि भाई जो मैंने लिया है वही अच्छा है। Exactly. बाद में कुछ करूंगा नहीं। Also, 3 Idiots played a very big part in, I think, or in our generation to pick up engineering. Well, that didn't go as great as I would expect. But then ठीक है, मतलब फिर worked in PWC as a technology consultant. फिर but that role was also more on the software development part, more on coding, etc. So फिर I understood कि यार मेरा calling more towards managerial ज़्यादा है, more towards like strategy consulting, understanding business problems, solving for clients, but more from a strategy point of view rather than just focusing on technology, which is just like one cog in the whole system. Again, बहुत इंटरव्यू टाइप आंसर दे रहा हूँ, but बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू भाई, विश्वास करो, सिर्फ पैसे के लिए आते हैं यहाँ पे लोग और अच्छा पोजीशन मिल जाए, बस यही चाहिए इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए भाई। So money is obviously, I would say, one of the primary angle to it, and I would not like deny that. But yes, मेरे केस में ये भी था कि मतलब I wanted to switch from a technology job to a management job, and of course मतलब salary hike तो एक है, but that also comes with the price of this huge exorbitant fees charged by IIMs and other B schools. So definitely that is also one thing, but उसका फ्यूचर कैश फ्लोस तो है ही यार, for sure. ओह कैश फ्लोस कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, बट ठीक है। और समझते हैं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस IIM इंदौर में कैसा रहा। ये बहुत सवाल हो सकते हैं कि
इनिशियली अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो बताएं, उसके बाद डिस्कस करेंगे या जज करेंगे कि और क्या किया जा सकता है। राइट सो IIM इंदौर ज्वाइन करने से पहले से ही लाइक आई वाज इन टच विद सम सीनियर्स एंड लाइक माय गर्लफ्रेंड आल्सो had done her MBA from IIM कोईकोड, so मतलब मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, कितने साल का रिलेशनशिप रहा आपका? it's over 4.5 years now. So nice यार, great. चलिए कंटिन्यू कीजिए। So मतलब just because we are talking about our MBA story, so she is a very important किरदार in my story, क्योंकि she only motivated and inspired me to pursue MBA. So when I joined PWC, she joined IIM कोईकोड, and when she passed out, I was like joining IIM Indore. So it was like just ऐसे एक के बाद एक just the successive steps. Yes, and great. Right, so फिर मतलब आई आस्क्ड हर आल्सो कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, एंड देन माय सीनियर्स आल्सो, आई वाज काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ दीस 2 years आर मोस्टली क्वाइट रिगोरस एंड मतलब काइंड ऑफ न्यू इट, बट व्हाटएवर मेंटल प्रिपरेशन यू टेक, जब कैंपस में आते हो, जब वो डे स्टार्ट होता है, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मतलब इट इज रियली स्ट्रेसफुल, इट इज रियली रिगोरस, बट इन रेट्रोस्पेक्शन जब मैं अभी सोचता हूँ टर्म 6 में आके, जब we are having like very खाली days, so मुझे लगता है कि it was all designed to prepare us for let's say some worst case scenarios, या फिर लाइफ में मतलब ये स्ट्रेस झेलने का जो वो है, I think paying this fees also is a kind of a training program for getting that used to that stress, used to that lifestyle, which is very much required for the corporate sector, growing in the corporate sector. So my personal experience has been I would say बहुत ही अच्छा. And that acha also includes very stressful days, including like term 1, which was very high on academics as well as placement preparation, company interviews, SIPs के लिए तैयारी, everything, filling out forms, etc., applications, resume building, a huge part of this MBA journey. Then second term, which was very academically rigorous, बहुत सारे subjects थे, back-to-back exams and everything. And then of course we had our summer internship, which was again like a very roller coaster ride, बहुत ही mixed वो experience था. थोड़ा सा relaxation मिला because I chose for the student exchange program, so एक semester I spent in Europe, as you know. और बताओ, भाई का CGPA बहुत ही अच्छा है, इसीलिए उनको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाने का मौका मिला. तो IIM इंदौर का एक फ्लैगशिप कह सकते हैं कि 3-4 चीज है जो IIM इंदौर को सेग्रीगेट करती है. एक है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, एक है रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम, और ये आपका हिमालयन आउटबाउंड प्रोग्राम. तो ये 3-4 प्रोग्राम है जो IIM इंदौर को. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वैसे इज लाइक प्रोवाइडेड बाय ऑल टॉप B schools in India, but हाँ मतलब IIM इंदौर has quite a good like partnership network with other more number of colleges. That is for sure. तो हाँ that is इसके बारे में भी कभी बात करेंगे for sure. डीप में. हाँ, तो that was also like experience in itself, a part of my MBA journey also. थोड़ा relaxing था, but then like had to prepare for और हमें स्विस चॉकलेट खाने का भी मौका मिला. Sure. So yeah, so overall I would say a very bumpy roller coaster ride, but one that I will cherish for my life forever. यार क्या ही बताओ, इस एक्सपीरियंस के बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे कि 2 साल का एक्सपीरियंस, और ये 2 साल लगा ही नहीं कि इतना जल्दी बीता. 2 साल भी नहीं बोलूंगा, क्या यार, 1.5 साल ही हुआ है लगभग. 1.5 years, मतलब 20 months ऐसा कुछ टोटल. इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने स्ट्रेसफुल डेज, इतने अभी तो इतने रिलैक्सिंग डेज है कि प्लेसमेंट्स हो गए, SIP हो गया, सब कुछ हो गया, 6 टर्म चल रहा है, बहुत ही रिलैक्सिंग है. बट फिर भी जो जर्नी रहा है ना, वो आउटस्टैंडिंग, मतलब uncomparable to any of our journeys in upcoming days or या back days. कुछ भी बोलो. Journeys in upcoming days or या back days. कुछ भी बोलो. As I was saying कि when you are in that, मतलब when you are experiencing that rigorous day, that is like a one hell of an experience. बहुत ही लग रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, no direction sense, कुछ नहीं, मतलब you'll be frustrated like anything. But once you're on the other side, you will feel a much more mature, much more like ready person, take on the world, एक king of the world type का एक feeling आता है, which is a very huge, I would say, reward of this program. That's amazing. That's amazing. Means मतलब जो support मिलता है ना, मतलब चाहे वो फैमिली ले लो, पेरेंट्स ले लो, अपने
तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, हम हमारे दोस्त मतलब हमारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल, हमारे प्रोफेसर, जो सपोर्ट आता है ना उस टफ टाइम में, वो हमें मतलब वहां से उठा के ले जाता है और इतना अच्छा इंसान बनाता है जो लाइफ में काफी सक्सेसफुल होते हैं। या सो आगे चलते हैं। तो आपने बताया कि काफी सारे चैलेंजेस आए, तो हम थोड़ा एकेडमिक रिगर और स्टडीज के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि इनसाइड IIM क्या होता है। राइट। सो रिगर obviously I would say जैसे IIM Indore kind of follows that IIM Ahmedabad kind of a pattern where पहले 2-3 टर्म्स में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का लोड होता है। सो देयर आर लाइक फर्स्ट टर्म में देयर इज आई थिंक 31 क्रेडिट्स व्हिच यू हैव टू डू व्हिच विल ट्रांसलेट टू मतलब एक आवर्स का वो होता है, बट इट्स लाइक कंटिन्यूअस क्लासेस होते रहते हैं। कितने क्लासेस है बता देते हैं? एक क्रेडिट में 5 क्लास है। यस, तो टोटल आप गिन लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने क्लासेस करने पड़ते हैं। और एक क्लास इज लाइक 1 hour 15 minutes। यस, 1 hour 15 minutes, 75 minutes every class। So and that is packed in a 3-month term। तो उतने में those are the number of hours that you have to do। So 31 credits in the first term, then 33 credits in the second term, very rigorous। Then थोड़ा सा relax होता है, 24 credits कुछ होता है in third term। And then finally in the second term you get a lot more flexibility in terms of academics कि you can choose your own electives। So second year, yeah। Yes। So जैसे बाकी colleges में मतलब not top B schools but some other B schools में ऐसा होता है कि there is some specialization that is done maybe in finance, maybe in marketing, but top B schools including IIM Indore में ये specialization नहीं होता है। Electives you can choose and create your basket of subjects and you can choose to let's say specialize in one niche or get your hands on different kinds of I think that's a great option given by a college to a student, right? Where you can select, means मुझे पता है कि मैंने फाइनेंस के सब्जेक्ट्स लेके इतना ही फाइनेंशियली अपने आप को चीजें सीखा कि मुझे अब लगता है कि मैं फाइनेंस को अगर नहीं लेता पढ़ता तो मुझे नॉलेज ही नहीं होता। तो वी लर्न टू चूज एवरीथिंग। जहां मुझे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चला तो आई चूज दैट, मार्केटिंग रिसर्च का पता चला आई चूज दैट, आई चूज बिजनेस मॉडल, आई चूज फाइनेंस सब्जेक्ट्स लाइक फ्यूचर ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स एंड अदर। सो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आई टोटली एग्री। एंड आल्सो मतलब मैंने because I want to pursue my career in management consulting, तो consulting में there is no like niche ऐसा कुछ नहीं होता है। You have to have a good grip on like different domains of management। So I got the flexibility of choosing domains from like subjects from different domains and that was a huge plus। But रिगर के बारे में थोड़ा बता देते क्योंकि इनिशियल रिगर के बारे में डेज में तो भाई क्या ही याद आती है भाई। अभी तो वो दिन याद आने पे लगता है कि भाई मैं था जो वो दिन पूरा झेला था। So a lot of subjects, all subjects having like different components ranging from quizzes। Also first term में जैसे अभिषेक बोल रहा था कि there were surprise quizzes। अभी we have scheduled quizzes which is I don't know good bad but है। And there is mid-term, there is end term, there are assignments, there are projects and whatnot। So like different components in one subject and just like the professors and the administration just keep you on your toes। मतलब just have to keep on working, keep on improving and well that kind of builds you as a person as well। So academic rigor मतलब improve करता है जो perfect। तो अब वर्कलोड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा दिन कैसा रहता था फर्स्ट ईयर में और कंपेयर टू सेकंड ईयर। तो दोनों बता देते हैं ताकि एक कंपैरिजन हो जाए। यस या तो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही जो अभिषेक ने डिस्क्राइब किया था दैट वाज लाइक अ टिपिकल डे इन टर्म 1। एंड टर्म 1 में ऐसा है कि लाइक हम लोग का समर इंटर्नशिप प्रोसेस भी एक साथ चलता है। सो इट्स वेरी रिगोरस बिकॉज you are handling 31 credits of subjects from different domains like marketing, OB, HR, finance, operations, etc. And these subjects are something that like you have no clue about because you're coming from engineering background, you're coming from some economics background, someone is coming from a commerce background, someone is coming from some pure science background। हमें कुछ पता ही नहीं and we are just thrown in this pool where we have to just navigate and understand all these subjects and score good and also parallelly like build a resume, prepare for summer internships, for the interviews, attend company presentations and all। तो मतलब
सब कुछ मिला के the first 3 months in the MBA college has to be the most rigorous phase. It's totally crazy, man, crazy. And it would not be a stretch to say that those 3 months were my most rigorous, like I've been in my entire life. Definitely. So, and I think many people who have done MBA would like agree. I agree. I totally agree. और हम सब agree करेंगे अगर जो भी MBA किया है. So again, very typical day would be like starting at very early in the morning because every day 9 AM classes होते थे. Have breakfast very quickly and just run to the classes. That the stairs of heaven हम लोग का एक है, which like it takes your breath away. दिखाएंगे वीडियो में दिखाएंगे. Shorts में तो जरूर देखेंगे. So you take that stairs and infinite number of steps and चढ़ के जाओ to the academic block, then just come on time for your attendance. कुछ professors ऐसे होते थे कि जो दरवाजा लगा देते थे dot at like 8:59. So मतलब attendance gone and मतलब सुबह में कुछ फायदा नहीं रहा. So ऐसे भी कुछ टाइम में हुआ है and बाकी like 1:30 को we used to refresh our inboxes for some like notification for surprise quiz. भाई वो डर अलग ही रहता था. And मतलब it was like कि unexpectedly आ जाता था कभी कि मतलब अचानक से. And so वो अभी तो like when I'm recollecting it's quite fun, but उस time में it was quite rigorous. And then we had, of course, in the evening or like any other time in the weekends, some company presentations or interacting with seniors for getting our resumes done right, iterating the resumes, gathering proofs for the resume points, and of course like preparation for the different domains जहाँ पे interview देने वाले हो. So it was a wonderful time. Definitely. थोड़ा अपने चैनल का मार्केटिंग कर लेता हूँ. तो गाइज इसी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन है आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या डेफिनेटली IIM के लाइफ के रिलेटेड वो कमेंट डाउन करें और उसका जवाब हम देंगे इसी के और डिफरेंट पॉडकास्ट के थ्रू. तो नेक्स्ट हम चलते हैं समझते हैं कि कंपटीशन क्या है, मतलब कैसा कंपटीशन है, थोड़ा पता चले लोगों को कि इनसाइड IIM में व्हाट इज द कंपटीशन पूल और क्या डाइवर्सिटी पूल है पीपल का, तो उसके बारे में पता. Just as I was saying earlier कि मतलब people from different backgrounds come here. तो जैसे बैकग्राउंड के बारे में क्लियर many people मतलब when I say background I'm mostly referring to academic background, but then diversity is also in terms of gender diversity, again like academic diversity and many other things. So we have lawyers, we have doctors, yes, we have CA people, CAs, we have engineers, we have BComs, we have bachelor in arts, we have economic graduates. मतलब I don't know how to make a list, but there are like people from every other academic background that we can think of, and that makes the environment quite I would say fun to learn, because MBA में we always hear about this thing called peer learning, and that is actually a thing because मतलब most of the classes in MBA, especially in the discipline of strategy and marketing, are case based. So there are some cases that are being taught in the class कि कोई कंपनी का एक केस प्रेजेंट होता है कि ये सिचुएशन में उन्होंने ये किया था and then the entire class participates and says कि मतलब what is their opinion on it, how could have they tackled it, how would have they approached the problem, etc. So what happens is when people come from different backgrounds, they approach the problem in their own way. So engineer सोचेगा कि यार मतलब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसका कॉस्ट कैसे घटाएं, इसको एनालिटिक्स में आ जाएगा एकदम specifically Indian engineers who are like very mathematical oriented. Yes, we have mathematics for breakfast. And but if you let's say if you tell like a BA student to approach the same problem, or anyone coming from a humanities background to approach the same problem, they would think from aspects जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. Philosophical aspect हो गया, like human aspect and everything, मतलब which is also very important because you're dealing with humans in the end of the day when you're running a business. So in your like एक B school environment में या फिर later in a corporate environment, because you're dealing with human beings, you have to have a very diverse point of view. So ये learning I think MBA classrooms देता है, and that is why this diversity is very important when it comes to our learning process. Education is concerned, I think like compared to if I say मेरे engineering undergraduate days,
people are obviously more competitive here, and I think the whole learning system has been built around a kind of a healthy competition. क्योंकि we have this मतलब cat में भी we have percentile. Like your absolute performance doesn't matter, it like your relative performance matters. बाकी लोगों ने कैसा किया उसके basis में you get your rank and as per that you get your admission. In fact हम लोग का marking भी is relative marking, so whoever has scored the highest will get the highest rank, and then so it's like the entire system is forcing you to be a bit of competitive, which I think is required to some extent in corporate. But मेरा इसमें philosophy थोड़ा different है. मतलब I generally am not a very big fan of competition, but हाँ truth is truth. मतलब people are competitive here. And that I think is good. तो हमने काफी कुछ चर्चा किया अभी कंपटीशन के बारे में, स्टडी के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, और भी डिटेल में जानेंगे कभी और किसी पॉडकास्ट में. बट आज तो लाइफ के बारे में जान रहे हैं कि इनसाइड आईआईएम कैसा लाइफ रहता है. तो ओवरऑल बेसिकली ये सारे चीज रहते हैं, और भी कल्चरल एस्पेक्ट रहते हैं. बट तो चलते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एमबीए, जो एसआईबी प्रिपरेशन. और वो 3 महीने के बाद जो हमारा समर इंटर्नशिप का फेज आता है, वो जनरली इज द टफेस्ट फेज इन एमबीए करियर, राइट? सो वो कैसे आपने हैंडल किया, और आपका एक्सपीरियंस बताएं, आपका जर्नी बताएं, ताकि दर्शकों को पता चले. राइट, समर इंटर्नशिप का प्रिपरेशन इज अ वेरी लाइक इज अ थिंग इन इटसेल्फ. आई थिंक एक वीडियो निकल जाएगा उसके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज मतलब when we come on campus and like let's say in a week your seniors or like placement committee members will tell you कि यार मतलब you have to start preparing your resume or start preparing your HR questions, or you have to start preparing for companies. But at that point of time हमें पता ही नहीं कि where does our interest lie, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा प्रोफाइल does it match with what we want, and if it doesn't match, then how can we bridge the gap and make our profiles and resumes attractive to recruiters from that domain. We know very little about that, and वो time बहुत कम मिलता है during summers. तो मतलब you have to have a very high ramp up, a very high learning curve, and मतलब have to take very quick fast decisions कि मतलब where do you want to go. For example, I decided कि my interest lied in management consulting, so I would obviously give consulting my first preference. So मेरा whole preparation, my resume preparation and my interview preparation would be around consulting preparation. So like that is something that you have to take a call and prepare accordingly. And again, I can speak about consulting preparation, so that will include building the resume in a way that all the different sections are kind of balanced. There are some spikes in the resume, जैसे बोलते हैं, it's a very common thing. And then of course the elephant in the room is preparing for cases, and ये cases ऐसे academic cases से different होते हैं. So case prep, yes, definitely. Case prep is a very important part of consulting. But then for other domains like marketing, finance, especially in finance, you have to have a lot of technical learning. You have to ramp up your knowledge a lot in a very small amount of time, especially for finance. So ऐसे domain-wise preparation is also a thing. And of course, like when you're preparing for summers, ऐसा नहीं है कि you're just focusing on one domain, क्योंकि you have to have some backup domains. So like parallelly, I was also preparing for finance and general management, etc. ये सब roles के लिए जो जैसे preparation होते हैं, that also I did. roles के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या roles आते हैं, मतलब in gist. Right. So mainly after MBA, you are working either in consulting or marketing, finance, HR, and it can be IT analytics, right? Maybe मैं कुछ miss कर रहा हूँ. Genman, right? Yeah. Genman and also product management, which is something like IT analytics, but like an extension of that, but product management and operations. And operations, yes. Yeah. So these are primary domains. But हाँ, हम लोग अगर एक में double click करेंगे तो उसमें एक पूरा दुनिया ही खुल जाएगा. So especially finance, I would say. Yeah. But yes. Those are primarily the roles, but yes, we can talk about it later in detail. Yeah, sure, definitely. And as far as the summer experience is concerned, so as I said, ये बहुत ही मेरे लिए mixed experience रहा है, to be honest. So just for the audience, मेरा internship was in Boston Consulting Group, BCG. Whoa. So I mean, BCG is one of the, I would say, top recruiters in consulting in IIM Indore, and so that
I'm very grateful that I got a chance to intern in BCG, and the learning experience was really nice. I mean, of course, I had my fair share of days, good and bad, mostly stressful days. And but all in all, even in bad days, I used to learn a lot. So and learning from both a technical point of view, that how can you apply your business knowledge जो हमने सीखा classes में, how can you apply it in real life situations when you're consulting clients, how do you apply that, and also from a soft learning point of view, how do you interact with clients. So जैसे we used to sit in client office and we shared the floor with CXO level people, ठीक है, CEO same floor में बैठता था, VP same floor में बैठता था, and like I used to interact with the VP for procurement, sales head, etc. तो the exposure that you get in terms of client interaction is great, and for a young professional these opportunities are very important. So I would say from that soft learning point of view, that is stakeholder management, team में अच्छे से काम करना, and from a technical point of view also, the summer internship had been a very rich experience for me. Great to know about that, and we will talk in detail about the SIP process and your journey at BCG also. Okay, so let's talk about the life hacks that anyone has to acquire to go through the 2-year journey of MBA. So उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और आपने क्या हैक्स अप्लाई किया वो बताएं. ये सवाल हो there is no one solution fits all, ऐसा कुछ नहीं है. The people make their own hacks and it just works for them. I don't know मेरे लिए क्या काम किया है, it's very difficult to pinpoint that, but I would say one thing that I have seen is people take things like very seriously, ठीक है, एकदम पागलों की तरह एक वो करते हैं, पागलों की तरह प्रिपरेशन करते हैं, पागलों की तरह ये करते हैं. एंड मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ, बट सम पीपल माइट टेक ऑफेंस कि वो बोलेंगे मैं डिलिजेंटली कर रहा हूँ तो मुझे पागल क्यों बोल रहा हूँ, बट इट हैजंट वर्कड फॉर मी. सो फॉर मी इट हैज बीन ऑलवेज की अ गुड मिक्स एंड बैलेंस ऑफ थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा खेल, थोड़ा सा ऐसा कुछ, थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए भाई, क्या करना है. So जहाँ पे in my summer internship, my like friends who also got shortlisted from different companies, they were preparing let's say 3-4 cases a day, और मैं बोलता यार मेरे से एक केस हो रहा है दिन का, ठीक है. तो these are the things that are like very much variable, and I think you have to find your sweet spot and like work around that. So मेरे लिए जो काम किया है वो एक balanced approach, not like over emphasizing on any one thing, but a very balanced approach. And one more thing in MBA I would say is that like create a good network of friends and not peers, because peers बहुत मिल जाएंगे में, but अच्छे सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, because these are the people who will help you during your tough times, and you of course also have to help them in the tough times. So that is another life hack. Great. So any ending note for the aspiring MBA candidates? Ending note यार, मतलब I just want to say कि don't do MBA just for the sake of doing an MBA, because ये बहुत फैशन चल रहा है अभी, especially in India. Means MBA has become this new engineering where people are deciding कि MBA करने के बाद क्या करें. जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, अभी MBA करने के बाद क्या करें. So because MBA is like a very kind of a, I would not say niche degree, but थोड़ा सा advanced degree है, and also it's a master's degree, so you have to be a little cognizant about that whether you want to go to that route or not. ऐसे मतलब करने के लिए मत करो. And also another recommendation which might be a little like unpopular opinion I would say is that कि मतलब if you're not doing MBA from let's say the top 30 colleges in the country like in India, I would say मतलब ये take it with pinch of salt, but you can skip it, ठीक है, because the placement scenario at least जिसके लिए लोग जाते हैं is not very rosy there. If you मतलब you have to know entering into the game that यही है इसका scenario and you're going to, then it's fine. But otherwise I would recommend कि keep your list in the top 30 and try to go. ऐसा मतलब MBA is not that one solution which will ऐसा नहीं है कि एक मैजिक बॉक्स है जो MBA करने से एकदम खुल जाएगा, सब कुछ लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. But of course it gives you a very good launch pad to start your corporate journey in a much better way. So take this decision based on your priorities, as I would say, and have fun. MBA is one of a kind journey. You will definitely have fun. Definitely. तो बहुत ही अच्छा लगा आज बात करके. बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रा जी.
तो हमने जाना कि लाइफ एट IIM कैसा रहता है, हमने जाना एकेडमिक्स रिगर क्या है, हमने जाना कि क्या एक्सपीरियंस था रुद्रा का थ्रू 2 years MBA जर्नी, हमने जाना कि स्ट्रेटजीज क्या थे इनके और इनके क्या लाइफ हैक थे, तो इनको 2 साल के जर्नी पे काफी मोटिवेटेड रखा और आगे ले गए। इनका समर इंटर्नशिप का जर्नी हमने जाना। तो आगे के नेक्स्ट वीडियोस पे और भी हम बनाएंगे। आपके कमेंट आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, और आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरी है वो नीचे कमेंट पे डालिए, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। Thank you for having me and all the best. Thank you. अरे बोल दे सब्सक्राइब करने को। Please subscribe. He is planning to have other guests on the podcast also, so it will be a very fun experience. And इसने मुझे पे नहीं किया ये बोलने के लिए, so yes. Great. Okay. Bye.